Hi viewers, this is your Raju sir. Today we shall discuss about your topic concept of intron. So my dear students, last class I thought that the splitting gene or split gene. So you know that here the split gene and intron is resemble to these topics. So we are easily understanding this topic. So first of all we are learning about the concept of the intron. So here the intron are sequence that interrupted open reading frame in RNA molecule. So intron is one of the sequence. This sequence is having the RNA molecule. How to get to the RNA molecule? RNA molecule is getting from the DNA. So because of here the intron is having the DNA and RNA. Keep it in your mind. And the second one, so spliceosomal intron. So spliceosomal intron are exclusive of eukaryotic cells only, not a prokaryotic cells. So here the spliceosomal introns are having the eukaryotic cells, nuclear gene. So transcript, nuclear gene is a transcript or the complex of small nuclear RNA molecule and protein. So eukaryotic cell में spliceogen of the intron स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का साथ और प्रोटीन का साथ वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप लोग वो सोचिए. सो नेक्स्ट वन देखो, इंट्रॉन आर क्रूशियल बिकॉज द प्रोटीन्स वेरी easy regulating enhanced by alternative splicing which the intron take a place in the important role. So first my dear students we are observing to the intron are a crucial. So crucial मतलब क्या है? क्रूशियल पर्सन बोलते हैं सब लोगों का. अरे वो क्रूशियल पर्सन है, उनका साथ बातचीत करेगा तो ठीक ठाक से समाधान नहीं होता है, आंसर नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं. सो सेम टू सेम यहाँ पर इंट्रॉन इज ए क्रूशियल बिकॉज ऑफ द प्रोटीन वेराइटी इज ग्रेटली एनहेंस्ड. So protein varieties is greatly enhanced by alternative splicing in the intron take a partly important role. So protein, we can get to the protein. How can you get to the protein? DNA is containing to the information. That information is transferred to the mRNA molecule. So here the mRNA molecule is made to the proteins. Keep it in your mind. So that means here the DNA is having the interrupted sequences such as intron. So here the intron is also transferred to the mRNA molecule. So intron मतलब क्या करना है? Intron is a non-functional sequence. That मतलब क्या करना? It is a fault DNA molecule. वो फाल्तू न्यूक्लियोटाइड क्या करना, कहाँ पर से ये कहाँ पर रीच कर रहा है? mRNA मॉलिक्यूल के साथ. सो दिस mRNA मॉलिक्यूल के क्या बोलते हैं ना, HN mRNA मॉलिक्यूल बोलते हैं. H मतलब हेट्रो, N मतलब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियर mRNA मॉलिक्यूल. सो हेट्रो न्यूक्लियोटाइड मतलब यहाँ पर होमोजाइगोसिस नहीं, हेट्रोजाइगोसिस. दैट मतलब क्या करना, इट इज़ अ डिविएशन ऑफ द फंक्शन. सो फंक्शन डिविएट कर रहा है. So here the mRNA molecule is not a pure mRNA molecule, not a mature mRNA molecule. So here the mRNA molecule is always mRNA molecule is always stopped by the adding of the intron molecule. Keep it to your mind. So that's why क्या कर रहे हैं ना, here intron is crucial to stop to the protein synthesis. So keep it to your mind that point. And the next point देखो, changing in the axon intron structure. So if the intron is having the mRNA molecule, so here the structure is also changed because of functional and non-functional, functional with along with the non-functional sequence of the gene is also called as split gene. ओके पहले बोल दिया. सो यहाँ पर क्या करना है, एक्सन इज ए फंक्शनल जीन एंड इंट्रॉन इज ए नॉन फंक्शनल जीन. वो दोनों एक साथ में रहेगा तो क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन क्या करना ना, फंक्शन पूरा चेंजिंग होते. इसलिए क्या करना ना, यहाँ पर देखो
the structure of a gene can also occur, including the loss or and the gain of the introns. So sometimes क्या करना वो चेंजिंग करने के लिए इंट्रॉन का स्ट्रक्चर चेंजिंग हो गई, सो दैट मतलब वो लॉस होता है, रिमूवल करता है, नहीं तो क्या करना है एडिंग करता है. सो इतना वैल्यू यू हैव इन द इंट्रॉन, दैट इज ए मेजर रोल. And the next one, the report. This report is focused on intron is origin and classification and evolution and loss and gain and function. So derivative to the role sliding and alternative sliding in human disease is also. So वो इंट्रॉन में वो मिलता है. आप लोग वो पॉइंट मस्ट बी सोचिए. So next we are moving to this one. So we are showing to this DNA molecule, that is a genomic DNA molecule. So in this genomic DNA molecule is containing to the axon and the intron. So here the axon and intron is containing to the genomic DNA molecule, my dear friends. So containing to the genomic DNA molecule. So here the genomic DNA molecule we are observing to. So we are observing genomic DNA molecule. So in this genomic DNA molecule is containing to the axon, intron. So here the axon, intron क्या करना ना. So here the genomic DNA molecule is containing to the axon and intron is transferred from the mRNA molecule. mRNA molecule के साथ ट्रांसफ़र कर रहा है. वो कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है पहले बोल दिया आपका ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस में मैं बोल दिया. प्रोमोटर यहाँ पर इन्वॉल्विंग होगा एंड mRNA पॉलीमरेज इन्वॉल्विंग होगी. इन्वॉल्विंग होने के बाद इट विल मेड टू द mRNA molecule. So in this pre-mRNA molecule we are observing here, this is a pre-mRNA molecule. So in this pre-mRNA molecule, having the pre-mRNA molecule is also containing to the which one, this is a axon and axon. So this one क्या करना ना, this one non-coding region, this one. So 3 and of non-coding region. So this one क्या करना leader region. So leading region this one. So leading region में क्या करना है, यहाँ पर क्या करना न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, ऐड होने के बाद क्या करना लीडिंग होता है. So this one में क्या करना ना, here the introns are there, those are the introns. So those are the introns क्या करना splitting करना चाहिए. So splitting करेगा तो क्या होगा ना, so इस तरफ से we can show this one spliced mRNA, that मतलब this is a matured mRNA this one. So वो genes क्या करना है splitting हो गया. So this one 5 dash, this one a leading role, this one a non-coding role. So this one क्या करना है split हो गया. Split होने के बाद it will form to the which type of the mRNA, which type of the mRNA. So we are observing to this one matured mRNA वो form कर रहे हैं. So आप लोग वो वाला सोचिए. And next one देखो my dear students. So this one देखिए pre-mRNA molecule है. So pre-mRNA molecule में क्या करना है, here the pre-mRNA molecule is having the, so this one axon and this one intron and this one axon and this one intron. So those are having the pre-mRNA molecule, keep it your mind. So वो pre-mRNA molecule बारे में मैं बता दूंगा. So pre-mRNA molecule में आप लोग देखिए. So pre-mRNA molecule में कैसा होगा आप लोग देखो, एक बार वो देखो. सो pre-mRNA molecule में आप लोग वो आइडेंटिफाई करिए. सो आइडेंटिफाई करेगा तो क्या होगा ना, दिस वन एक्सन है, दिस वन एक्सन है एंड दिस वन इंट्रॉन है एंड आप लोगों को वो आइडेंटिफाई करना चाहिए. सो एक्सन इंट्रॉन, सो वो वाला आइडेंटिफाई एक्सन इंट्रॉन. सो आप लोगों को वो सोचना चाहिए. सो एक्सन इंट्रॉन में देखो यहाँ पर. सो दिस वन है वो एक्शन क्या करना स्प्लाइसिंग कर रहे हैं. सो स्प्लाइसिंग करेंगे तो इट विल फॉर्म टू द मैच्योर्ड mRNA मॉलिक्यूल. सो दैट मतलब क्या करना है, यहाँ पर एक्शन है पहले क्या करना है एक्शन 1 एक्शन 2. सो दिस वन इंट्रॉन है, वो इंट्रॉन क्या करना स्प्लिचिंग की है. सो स्प्लाइसिंग करने के बाद क्या करना है एक्शन. सो दिस वन क्या करना ना मैच्योर्ड mRNA मॉलिक्यूल आप लोगों को वो सोचिए. एंड नेक्स्ट वन देखो दिस वन. सो स्प्लाइसिंग कैसे कर रहे हैं. सो सिंगल एक्शन जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड नेक्स्ट वन क्या करना है, वो सिंगल एक्शन जीन ट्रांसक्रिप्शन में वो सिंगल जीन क्या कर रहे हैं ना स्प्लाइसिंग कर रहे हैं. सो स्प्लाइसिंग करने के बाद क्या करना वो जीन क्या कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं. सो वो जीन ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद क्या करना इट विल फॉर्म टू द विच वन फॉर्म कर रहा है. सो जीन फॉर्म कर रहा है और वो जीन क्या करना कैसे फॉर्म कर रहे हैं ना वो वाला आप लोगों वो प्रोसेस आप लोगों में आइडेंटिफाई करिए. वो नहीं चाहिए वो प्रोसेस छोड़ो. सो नेक्स्ट वन क्या करना है, लेट वी शैल डिस्कस अबाउट की इंट्रॉन क्लासिफिकेशन. You know that my dear students,
So we are observing to the intron classification. एक बार थोड़ा रखो. So first one देखो. Sorry for the inconvenience. So देखो theories of the intron origin. So intron origin theories कैसा होगा? There are two competing theories to account the theories of this intron. So two theories is having the intron. First one theory क्या करना ना? Theory number 1 no intron late theory. Second one theory intron earlier theory. So intron late theory and intron earlier theory. वो theories क्या करना? Origin of the intron के लिए वो theories है. So first one the intron late theory assumed that all the spliceosomal introns are recent arrival by the insertion of the either group 1 intron or transposable elements into the eukaryotic genome. So eukaryotic genome में क्या करना है? Here the late theory intron late theory is having group 2 में वो है. So वो group 2 में only eukaryotic में है. And next one क्या कर रहा है ना? Intron earlier theory are extended to the axon theory of the gene. So with the different hypothesis about this about the data of this origin, both theories have observable supports. So first one वो theory है intron late theory and intron earlier theory. So intron late theory मतलब means क्या करना? वो late में एक theory है. intron कहाँ पर origin कर रहा है? So intron कहाँ पर origin कर रहा है? eukaryotic genome में origin कर रहा है. So eukaryotic genome में कैसे origin कर रहा है? So here the intron is insertion to the eukaryotic organ. Insertion मतलब क्या करना? stuck कर रहे वो gene में. So stuck करके क्या करना? It will form to the non-functional gene. So that मतलब क्या करना? Here the gene is formed to the coding sequence. So understanding करिए. And बाद में क्या करना? Earlier theory और axon theory. Axon theory में क्या करना ना? These are the different hypotheses have in the intron. So theory में देखो theories of the origin of the introns. So the axon theory of genes has three major components that addresses the molecular mechanism of the origin of the new genes. So three major components है. So first one component number 1 no axon shuffling, and second one no the anti-quality of the intron, and third one no the modular compression of the gene. So both are the three have in the axon theory. So here the early intron theory extended to the axon theory. So here the axon theory is having the three components. So first one no axon shuffling theory. So the novel gene can be created by the juxtaposition of various projecting axon in new combination. They are called recombination. So axon theory में पहले क्या करना? वो recombination theory है, because non-functional हो गया. So non-functional हो गया तो variation कर रहा है. So variation करेगा तो वो recombinant कर रहा है ना, वो organism body में gene क्या करना? recombinant हो गया. So that is first one axon shuffling. And next one क्या करना? anti-quality of intron. Intron exists before the emergence of eukaryotics. So eukaryotic में पहले क्या करना? वो exist कर रहा है eukaryotic में. Probably at the being gene evolution, this idea was based on the genetic observation and chemical properties. So बाद में क्या करना ना? genetic observation और chemical properties में देखूंगा तो वो इंट्रॉन नॉन फंक्शन कर रहा है ना, इसलिए चेंजिंग हो गई. So that is a second one. Third one no the modular comparison of the gene. So axon of represent independent function unit, and thus the gene possesses a modular composition. So वाला understanding करो. So next one क्या करना है? Intron classification. The classification of the introns most always being with the
डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब एडेनाइन ग्वानाइन थायमाइन and next one क्या करना and ending with adenine guanine and spliced by the small nuclear ribonucleoprotein. So small nuclear ribonucleoprotein क्या करना वो splicing कर रहा है. So next one here the groups are there पहले बोल दी ना. Group number 1. So classification में क्या करना intron is classified into the 3 groups. First one group number 1. In many genomes including mitochondria, chloroplast, at least one nuclear gene and even bacterial phase 3-4. So इसमें क्या करना many genomes are there. So here the many genomes में क्या करना in different gene are homologous. So different वो genome में क्या करना mitochondrial genome and chloroplast and at least the nuclear membrane gene and otherwise the bacteria for gene में क्या करना ना homologous genes are there and autonomous elements and may of them encoded protein that enable to the transpose at the DNA level into the homologous site. So यहाँ पर encoded कौन कर रहा प्रोटीन encoded करने के लिए वो इंट्रॉन यूज होगी. सो दैट इज फर्स्ट वन गैप 1 है. सो सेकंड वन की वो गैप 1 में क्या करना है सो सेल्फ स्प्लाइसिंग कर रहा है इंट्रॉन. समटाइम्स क्या करना सेल्फ स्प्लाइसिंग होगी. सेल्फ स्प्लाइसिंग मतलब क्या रिमूवल फ्रॉम द आरएनए मॉलिक्यूल. सो आरएनए मॉलिक्यूल में क्या करना है खुद के रिमूवल कर रहा है वो इंट्रॉन मॉलिक्यूल सेल्फ स्प्लाइसिंग होगी एंड रिक्वायर्ड ancillary protein in view. So that one आप लोगों ने लिखिए. Next one group 2. In mitochondria and chloroplast different form of that group 1 but similar to that other classification of the intron. Autosomal elements है self splicing है many of them encoded large proteins which are include homologous है. सो ज़्यादा लार्ज प्रोटीन क्या करना नाम वो स्प्लाइसिंग कर रहे इंक्लूड होमोलॉगस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड. सो दैट मतलब स्मॉल वेरिएशन है ग्रुप 2 में क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ द प्रोटीन यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना यहाँ पर देखेंगे तो एनकोड कर रहा है ए प्रोटीन एनकोडेड टू दिस एनेबल टू ट्रांसपोज. सो मेनी ऑफ देम encoded proteins. यहाँ पर क्या करना large proteins which including homologous to the reverse transcription. So reverse transcription कर रहे वो प्रोटीन encode करने के लिए which one है intron वो वाला अंडरस्टैंडिंग करिए. सो एनकोड कर रहे मतलब क्या करना है एनकोड मतलब क्या करना है डिस्ट्रॉय कर रहा है प्रोटीन के लिए बिकॉज क्या करना ना इंट्रॉन्स इज ए नॉन फंक्शनल प्रोटीन. सो दैट्स वाई क्या करना ना प्रोटीन फॉर्मेशन करने के लिए एमआरएनए चाहिए. एमआरएनए प्योर ट्रू मेच्योर एमआरएनए फॉर्मेशन नहीं है. सो दैट्स वाई क्या करना ना हियर द एनकोडिंग बाय दिस इंट्रॉन सीक्वेंस कीप इट योर माइंड. एंड नेक्स्ट वन देखो आप लोगों सो इंट्रॉन क्लासिफिकेशन में सो ग्रुप 3 देखिए लास्ट वन. सो ग्रुप 3 में क्या करना दिस वन शार्ट है ग्रुप 3 में वो इंट्रॉन क्या करना शार्ट वन है. सो इट इज़ वेरी एडेनाइन थायमाइन रिच है यहाँ पर वो इंट्रॉन में. सो यूग्लिना क्लोरोप्लास्ट में वो इंट्रॉन है विच वन है ग्रुप 3 इंट्रॉन है. ग्रुप 1 इंट्रॉन ग्रुप 2 इंट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया में है क्लोरोप्लास्ट में है. और नेक्स्ट वन क्या करना ना अदरवाइज सम ऑफ द हैड ऑलरेडी गिवन टू देम. एंड नेक्स्ट वन ग्रुप 3 में ओनली यूग्लिनो क्लोरोप्लास्ट में है whose splicing mechanism and sequence requires are unknown. सो यहाँ पर क्या करना वो ग्रुप 3 में यहाँ पर इंट्रॉन सेल्फ स्प्लाइसिंग कर रहा है बट यहाँ पर क्या करना ग्रुप 3 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग करने के लिए 1 पर्सन इन्वॉल्विंग करना चाहिए अननोन पर्सन. हम लोगों को पता नहीं कैसे इन्वॉल्व करने के बाद क्या करना ना वो इंट्रॉन रिमूवल कर रहा है फ्रॉम द आरएनए मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए 1 पर्सन चाहिए. सिमिलर अनयूजुअल इंट्रॉन हैव बीन फाउंड इन ड्रोसोफिला एंड चिकन. सो दैट मतलब क्या करना वो मुर्गी में है और नेक्स्ट वन मुर्गी में है और नेक्स्ट वन क्या करना ड्रोसोफिला में वो इंट्रॉन. सो एन एग्जांपल दीजिए. एंड नेक्स्ट वन क्या करना ना नेक्स्ट वन इंट्रॉन में देखो नेक्स्ट वन वो ट्रांसफर आरएनए इंट्रॉन.
सो नेक्स्ट वन है शॉर्ट टर्म ऑफ द आरएनए स्प्लाइसिंग डिफेंस मैकेनिज्म, वो सभी लिख दो, प्रॉब्लम नहीं. एंड नेक्स्ट वन देखो माय डियर स्टूडेंट्स. सो next mechanism of intron evolution. So here the mechanism of intron evolution, intron is loss and intron is gain and intron is sliding. So those are the three portions which have in the mechanism of the introns evolution. So intron sliding or migration, relocation of intron or axon boundaries over short distance at the 1 to 15 nitrogen base pairs in this course of the evolution. So here the evolution में आप लोग हम देखिए. So here the intron or axon क्या कर रहा है ना, ओवर शॉर्ट डिस्टेंस कितना होगा ना 1 to 15 नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ क्या कर रहा है ना, माइग्रेट कर रहा है वो एंट्रॉन्स. दैट वन इज कॉल्ड एंट्रॉन स्लाइडिंग बोलते हैं. और नेक्स्ट वन देखो, एंट्रॉन स्लाइडिंग हैज बीन पोस्टुलेटेड बाय एडवोकेट ऑफ द एंट्रॉन हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द सरप्राइजिंग फील्ड. सो दिस वन वो ओवरलैप कर रहा है. आप लोग वो सोचिए, इतना नहीं चाहिए वो एंट्रॉन के लिए, जस्ट आप लोग वो लिख दो. सो यहाँ पर देखो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग टाइप ऑफ द एंट्रॉन. सो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग टाइप ऑफ द एंट्रॉन देखो. सो दिस वन एंट्रॉन है और दिस वन एंट्रॉन है. सो बोथ आर द एंट्रॉन्स. सो दिस वन क्या करना है, दिस बोथ क्या कर रहा है ना, रिमूव करना चाहिए. सो दैट मतलब दिस इज एक्शन, दिस इज एक्शन. सो दिस वन एक्शन मिडिल पोर्शन में. सो दैट मतलब क्या करना है, एक्शन यहाँ पर स्किपिंग ऑफ द एक्शन. सो ये एक्शन दिस वन एक्शन स्किपिंग करने के बाद क्या करना है, एंट्रॉन क्या करना है, अल्टरनेटिव कर रहा है दिस वन एंट्रॉन. सो दिस वन एंट्रॉन है और दिस वन एंट्रॉन है, वो अल्टरनेशन कर रहे हैं वो एंट्रॉन. सो आप लोग हम अंडरस्टैंडिंग करिए. टू टाइप्स ऑफ द अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑफ द डिस्प्लेस. सो एक्शन स्किपिंग इन्वॉल्विंग टू द स्प्लाइटिंग और द एंट्रॉन एक्शन and entron retains an entron as a part of the axon. So this one क्या करना, वो एंट्रॉन है, वो एंट्रॉन कहाँ पर है नहीं, यहाँ पर रिटेन हो गया. आप लोगों को वो सोचिए. सो नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पर आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग हो गया. सो दिस इज mRNA मॉलिक्यूल. सो दिस वन प्योर mRNA मॉलिक्यूल. सो दिस वन cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA मॉलिक्यूल दिस वन. एंड दिस वन देखो, दिस वन वो वाला देखिए, वो ब्लैक वाला देखो. सो ब्लैक वाला ब्लैक बॉक्स के क्या बोलते ना, द जीनोमिक DNA शोइंग इनटू द साइट्स ऑफ द रिकॉम्बिनेशन. सो दैट वन रिकॉम्बिनेशन है. और अदरवाइज वो वाला देखो, दिस वन एंट्रांस है. सो वो एंट्रांस क्या करना, रिमूव करना चाहिए. सो रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करना, इट विल फॉर्म टू द प्योर मेच्योर्ड mRNA मॉलिक्यूल. आप लोगों वो मैकेनिज्म देखो. सो दिस वन क्या करना, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन दिस वन. सो बिकॉज क्या करना, दिस वन सिमिलर है. सो दिस वन क्या करना, रिमूव करेंगे तो वो बोथ आर एडिंग हो गया. सो दैट मतलब आप लोगों को क्या करना, कैसे वो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर कर रहा है cDNA में. आप लोगों वो सोचिए. और नेक्स्ट वन देखो माय डियर स्टूडेंट्स. सो मॉडल एक्सप्लेनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द इंट्रॉन. सो मॉडल एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म ऑफ द इंट्रॉन लॉसेस. सो यहाँ पर गेन है, वहाँ पर लॉसेस है. सो यहाँ पर क्या करना, फर्स्ट वन पॉइंट देखो, retroposition model, second one Fink model, and third one alternative splicing based model. So three models is having the intron. So first one देखो, retroposition model, whether the cDNA transcription of the gene is inserted back into the genome, resulting in the gene that lack intron. So as poly at the मतलब क्या करना, adenine by thymine thiol and the flank by short description repeats. सो आप लोगों को पता है, वो इमेज ऑलरेडी दिख रही है आप लोगों वो देखिए, वो इमेज देखे तो क्या करना ना. सो दिस वन होमोलॉगस cDNA, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री DNA. सो वो कॉम्प्लीमेंट्री DNA क्या करना, एंट्रॉन रिमूवल हुई. सो दिस वन एंट्रॉन है, दिस वन एंट्रॉन है. वो एंट्रॉन क्या करना, रिमूवल कर रहा है. रिमूवल करने के बाद क्या करना, शॉर्ट टर्म क्या करना, वो लिंकिंग हो गया. दिस बोथ क्या करना, लिंकिंग कर रहा है. सो लिंकिंग करेंगे तो दैट वन मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच मॉडल है, that one model is also called which one model है,
retroposition model. So inserted of the back into the genome, inserted one by one क्या करना है, attach हो गया कब वो lags in intron lag होना का टाइम में. So keep it your mind. And the next one क्या करना ना, Fink model. So illustrate intron. Fink model is illustrated to the intron loss by the homologous recombination between the genomic type. So intron Fink model में देखो, so Fink model is also given to this, illustrated to this one. Intron is lost by the homologous recombination between the genomic copy of gene and the cDNA complementary DNA transcript with the lack of the intron. सो इंट्रॉन लॉस होने के बाद क्या करना है, जीनोमिक कॉपी यहाँ पर कर रहा है. सो इतना लॉस नहीं था, क्या करना है, जीनोमिक कॉपी नहीं है, वो मॉडल ऐसे बोलते हैं. नेक्स्ट अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग बेस्ड ऑन द मॉडल. सो जंग इटल 2014 में वो मॉडल बोल दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जंग ईट ऑल सो प्रपोज्ड ऑन दिस AS based on model. AS based on AS मतलब alternative splicing based on the model. So this which can be used in conjunction with the retroposition and the Fink model to explain the IR type events observing in gene duplication. So वो वाला क्या करना, जस्ट वो जंग एटाल क्या करना प्रपोज किया अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग मॉडल. अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग मॉडल में क्या कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल इफ द इंट्रॉन इज लॉस्ट टू द जीएनए मॉलिक्यूल, एमआरएनए मॉलिक्यूल और डीएनए मॉलिक्यूल, सो अनदर वन यहाँ पर क्या करना, फ्लिंक मॉडल के साथ क्या होगा ना, जीनोम कॉपी कर रहा है. सो एज वेल एज ईयर द फ्लिंक मॉडल के साथ क्या करना ना, कंजेक्ट कर वो कॉपी करके. सो ऐसे वो बोल दिया, कौन है ना, एटाल. सो नेक्स्ट वन देखो, दिस वन देखिए, क्लासिफिकेशन इंट्रॉन लॉस मैकेनिज्म ऑलरेडी पहले बोल दिया. सो दिस वन जीनोमिक डीएनए. सो यहाँ पर क्या करना, वो जीनोमिक डीएनए में क्या करना, दिस वन ट्रांसक्रिप्शन है. सो जीनोमिक डीएनए क्या करना, कैसे ट्रांसफर कर रहा है, एमआरएनए के साथ ट्रांसफर कर रहा है. यहाँ पर देखो जीनोमिक डीएनए में दिस वन इंट्रॉन्स है. सो दिस वन इंट्रॉन्स में क्या करना ना है, सो दिस इज कन्वर्जन टू द एमआरएनए मॉलिक्यूल बाय द polytail this one वो छोड़िए. सो ये द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल है. जीनोमिक डीएनए में क्या करना, इट विल फॉर्म टू द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में वो कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल. सो दिस वन फॉर्म करने के बाद क्या करना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं. सो करने के बाद क्या करना, इनकम्प्लीट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ द 5 डीजेनरेशन. सो 5 के बारे में क्या करना है, 5 प्राइमर के बारे में डीजेनरेट कर रहे हैं. सो दिस वन में देखो, दिस वन में क्या करना ना, रिट्रोपोजिशन मतलब इनकम्प्लीट सीडीएनए मॉलिक्यूल. सो दिस वन कंप्लीट सीडीएनए, इनकम्प्लीट सीडीएनए मॉलिक्यूल. सो पॉलीमर टाइल 1 आर देर यहाँ पर. सो दिस वन क्या करना, टारगेट सीक्वेंस में क्या करना, नॉन स्पेसिफिक को वो इंट्रॉन क्या करना, रिमूव हो गई. तो सो दिस वन रिमूव हो गई, इट विल फॉर्म टू द डीएनए मॉलिक्यूल. आप लोगों वो सोचना चाहिए, नहीं तो क्या करना, वो सोचा नहीं तो बहुत मुश्किल लगता है. क्यों वो मुश्किल लगता है, आप लोगों देखो. सो इंट्रॉन का फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंट्रॉन. सो फर्स्ट वन डायरेक्ट रोल, इंट्रॉन का डायरेक्ट रोल, इनडायरेक्ट रोल ऑफ द फंक्शन. इंट्रॉन सीक्वेंस रेगुलर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, ऑलरेडी मैं क्या क्या बोल दी वो वाला. इंट्रॉन सीक्वेंस एनहांस्ड जीन रेगुलेशन, वेरी गुड. इंट्रॉन सीक्वेंस कंट्रोल्ड एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शनल क्रोमाटिड असेंबली, ऑलरेडी बोल देना. इंट्रॉन क्या करना, वो कंट्रोल कर रहे हैं. सो इंट्रॉन्स इन दिस 5 to 3 प्राइमर्स अटर अफेक्ट टू द नॉनसेंस मोडिएटिंग डिके. सो दैट वन आप लोग वो डायरेक्ट वाला फंक्शन है. सेकेंड वन फंक्शन क्या करना है, डिफरेंट ऑर्डरनल पोजिशंस इंट्रॉन विद इन द जीन मे बी हैविंग डिफरेंट फंक्शन रोल. ऑलरेडी मैं बोल दी वो रूल में. इंट्रॉन लेंथ मैटर्स इन द एफिशिएंसी नेचर ऑफ द सिलेक्शन. आप लोगों वो वाला सबसे सब लिख दो. सो वो इंट्रॉन के लिए आप लोगों मस्ट बी वी आर राइटिंग टू द इंट्रॉन फंक्शन. वो इंट्रॉन फंक्शन के लिए आप लोगों का पता चलेगा, एक बार पढ़िए, ईजी हो गया. सो नेक्स्ट वन क्या करना है, ईयर द इंट्रॉन में नेक्स्ट वन देखो माय डियर स्टूडेंट्स. सो ईयर द इंट्रॉन में नेक्स्ट वन इंट्रॉन डिसीजेस है.
So some study to have to the found in evidence in this intron are either directly or indirectly involving to the cancer causation. So intron में क्या करना है, cancer cause कर रहा है. और next one क्या करना, mutation that affect splicing can causes to the disease directly or contributed to susceptibility or the several diseases. Mutation में क्या करना है, several diseases causes to the intron. And next one, most of splice site mutation that leads to the human disease, involving that the mutation GTO वाला आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करिए. सो दिस वन इंट्रॉन डिजार्डर डिसीज के लिए आप लोगों को वो लिख दो, वो इजी हो गया. सो दैट वन आप लोगों को वो सोचिए इंट्रॉन के लिए. सो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द इंट्रॉन. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क टू देम. वो कंक्लूजन आप लोगों को लिख दो, वो प्रॉब्लम नहीं है. थैंक यू एंड ऑल ऑफ यू राइट योर नोट्स. थैंक यू.